ठीक है. Let's हाँ let's come to the हाँ बोलो. Sir, like we are using preprocessor, sir. हाँ. So, sir, is it necessary to use in most of the program, or because we are only using the preprocessor in case of array, like where we want the flexibility of program, so that is where we are using macro. No, whenever it is required, you can use the macro. If it is not required, then you can go for the general process. Okay. Yes. ठीक है. आपको एक एरे पे फिक्स के लिए बनाना है, हमेशा वो 10 ही रहे. माइक्रो बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप एरे के साइज को 10 डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो 10 का ही है. लेकिन आपको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, द साइज ऑफ द एरे मे बी फ्लेक्सिबल. ठीक है, टाइम टू टाइम. तो अभी भले 10 का है, हो सकता है कि बाद में ये 12 का हो जाए, 15 का हो जाए रिक्वायरमेंट. तो जहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाना हो एरे में, उसके साइज के में फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, गो फॉर द मैक्रो. क्योंकि वहां पे क्या होगा, वन चेंज से सारा चेंज होगा. नहीं कीजिएगा तो आपको बार बार हर जगह जहां जहां साइज का आप इस्तेमाल किए हैं वहां आपको चेंज करना होगा. क्लियर? Yes. Okay. What is the let's come to the some revision for the string functions, string library functions, and tell me what is the role of strlen function. Anybody? It is used to find the length of the string. Length of a string. How it count the length of a string? Character by character. Character by character. ठीक है. Character. So is it count the character only or spaces too? Spaces also, sir. Spaces, include spaces, sir. Spaces too. बिल्कुल बिल्कुल. Sir, it just exclude the null character, otherwise it counts It count each and all the every characters. character of the string, Okay, except okay. null character. It only exclude the null character. And how we can write the null character in terms of coding? Sir, Backslash. zero. Backslash 0 is the null character. Okay. What is the basic importance of null character in a string? Why Sir, compiler actually it put is this used- character at last of the string? Sir, the Yes. compiler thinks all the memory unit as a character, sir. So to terminate the string, we use null character. The Okay, compiler very use good. null character. Very good, very good. Because compiler knows that all the cells, okay, that is defined inside the RAM memory, okay, are in form of character. Okay. So terminating the character, compiler uses null character. Null characters. Clear? Okay. Let's come to the what is the importance of strcat. Let's discuss first the other thing. Like suppose there is a variable a, that is a string type, and I am storing a value let Ravi. Okay, so a is equal to Ravi, let, and I want to assign this value in another string type variable like b, like I am writing b is equal to a. Is it true? No, sir. No, sir. No, sir. It is No, not sir. true. So we can't use the assignment operator for the string variables. Yes, sir. Okay. Yes. Because it's Why not- we not using assignment operator with the string variables? Because it is not a primitive data type, sir. Because it is not a primitive data type. Absolutely right. So all the operators are valid only for the
Primitives, primitive data. data types. Oh, The predefined data Excuse types. me, sir. yes. Sorry, sir. Explain primitive and non-primitive data type once more. Primitives is nothing but those data types which are provided by the programming language are called the primitive types or predefined types. Like int, char, float, these are the predefined types. Okay. Apart from that, there are other more data types like structure, struct, okay, union. Okay. These are also a data type, but it is a user-defined data type. It is not a User-defined data types. primitive data types. Predefined. Clear? Clear? Mr. Yes, sir. Gaurav. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So suppose if we want to assign the string variable value into another string variable, then how we can do this? By the Because function assignment str. operator is not allowed here. Yes, sir. How we can do this? Sir, by Str the get use by the function. predefined function strcpy. strcpy. Okay. Okay. That's okay. And how much parameter defined inside the strcpy? Two. Two parameters, sir. Source and destination. Source and destination. So first is represent the source and second one represent the destination. Is it No, true? sir. No, sir. Oh, It's just sir. First First one one converters of what represent you the said right now. destination and second one represent the Source. source. Okay. How can we compare the two string? By the function strcmp. CMP, yes, sir. Okay. strcmp, which type of value returned by the strcmp? Integer value. Integer value. So it return any integer value, like it return 100, Yes, sir. it return 12, it return minus. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then what is the meaning of negative positive value here? Sir, if the first string is greater than the second string, then it will return positive. If the first string is equals to second string, then it will return 0. And if the first string is smaller than the second one, then it will return negative value. So how it can be determined the bigger and smaller on the characters? So, How sir, according to ASCII value, sir. according to ASCII value, absolutely right. यानी strcmp ठीक है ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन करता है और इसी के डिफरेंशिएशन के आधार पे नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो वैल्यू रिटर्न करता है. So what was your question right now? Or the answer which yeah. नहीं हो गया, वो क्वेश्चन का आंसर भी हो गया. क्वेश्चन ये था कि strcmp जो डिफरेंसेस निकालता है वो डिफरेंसेस किसके आधार पर निकालता है? कैरेक्टर्स के किस. ठीक है, तो द आंसर इज की कैरेक्टर्स के ASCII वैल्यू के आधार पर निकालता है. ठीक है. ओके. एंड हाउ वी कैन कंकेट द टू स्ट्रिंग? By strcat. strcat. ठीक है. And what is the meaning of concatenation of a string? Copying second string and the last of first string. It copies the second string at last of first string. First string. Okay, absolutely right. Okay. How many cases of a string? Two case, lower case and upper case. I think this is not complete. You are asking about cases, so
Toggle Basically, case, we sir. can write this. Manish is saying toggle case. Yes. Okay, that This is the case, third. about that case. Yes, that case. Okay, okay. Toggle case, sentence case. The Yes, sir. string, Title Title case. case. the string can be represented in 5 cases. Lower Yes, sir. case, upper case, third one is a toggle case, fourth one is Sentence case. sentence Title case, And sentence case. And sentence. fifth is title case, Yes, and sir. title case is also known as a proper case. Somewhere it is called proper case. Proper case. These are the 5 cases related with the string. Okay. And what is the meaning of abbreviation of the string? Suppose my name is Ravi Kumar Soni. How you can abbreviate a name? Sir, like R R dot says K Soni. Soni, R R dot K dot dot S. Sony. मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर निकाल दिए, that is RKS. That is the one form Yes, of sir. the abbreviation. Yes, और sir. हर एक वर्ड Yes, का फर्स्ट लेटर निकाल दिए लेकिन लास्ट वर्ड पूरा रख दिए. That is another Yes, sir. way of abbreviation like a RK Soni. Yes, ठीक है, Soni. ये 2 हो सकता है कि और भी कोई फॉर्मेट हो. ठीक है, ये 2 पॉपुलर फॉर्मेट थे जो आपको बताए गए थे, समझाए गए थे. मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 ही एब्रिविएशन का फॉर्मेट हो सकता है, और भी हो सकता है ये, लेकिन यही 2 नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलता है ज्यादातर. ओके. Suppose if you want to store a single string value, then you have to create a array of character, single dimension array of character. And suppose if you want to store 10 string values inside a string type, then how we can declare the array? Sir, like I will declare a double dimension array, sir. Okay, Sir, we can please declare repeat your double question. dimension array. Okay, so in double dimension, there is a row size and there is a column size. Yes, What sir. is a what row size represent here for what, and column size represent here for what? The row size represents the number of strings which we are going to store in the array, and the column size represents the size of one string, sir. Like one string will be how much The character maximum long. size of the string, Yes, sir. We the can say that. maximum number of characters that will be Yes. stored by the string. Okay, that's okay. Okay, let's come to the next. What is function? Can we say that function is a module? Function is a piece of Yes, code sir. which is used to perform a specific operation in our program. Very good. Sir, it And is there just are, like our there are 2 program, types sir. of program: subprogram 1 and subprogram 2. And बोलने दो विनायक मनीष को. हाँ, sorry, function is a piece of code which is used to perform some specific operation in our program or an or module. And there are 2 more. The programs that can be divided 2 modules. First one is subprogram 1 and second one is subprogram 2. And these subprograms are the functions. We can say that these Functions, yes, subprograms are the function. Yes, sir. If we will divide a program into multiple subprograms, so we Yes, can sir. design this subprogram by using function. Yes, sir. Okay. And we can divide a main program into subprograms. This approach is called a modular approach. So we can say that function is a module. Yes, sir. Or function is a submodule. Yes, sir, obviously. Because program is a main module, so function is a submodule. Submodule, yes. Because C is a modular modular approach programming. Yes, sir. Okay, so function is the module. Yes, sir. And program is the main module. Yes, sir. Any doubt? No, sir. No. Okay.
Why function is required? What are the advantages of function? Sir, it reduces code redundancy. It reduces code redundancy. Apart from code, right? Apart from It code it also redundancy, allows us to debug the program in more convenient manner, convenient. because we will not go for the whole program. Otherwise, we will just go to the module where we are getting the error. So we'll Error. just correct that particular module of the whole program, sir. Simply go to that function where you are getting some errors and just rectify them. Apart from that function, all other functions will run properly. Okay? Sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Very good. And what do you mean by called function and calling function? Sir, the How you function can which say that a function is calling function, and how you can say that a function is a called function? whenever a particular function calls the other function, then that function is called calling function, and the Absolutely function which right. is called by the calling function is called called function. Called function. Call function like some, sir, some add. Mhm. It is. And what do you mean by function prototype? So function prototyping is a single line declaration which allows us to tell the compiler about the user defined function which we made. Okay. It is necessary if we are using a top down approach, but in bottom up approach we may ignore that particular line. That is function prototyping. And what do you mean by top down approach? Sir, in top down approach, sir, we basically define the main function above the user defined function, and in yes, sir. And in bottom up approach? In bottom up approach, we define the main function below the user defined function. So so in this case, sir, we don't require the prototyping concept, sir. Okay. At the time of running the program, compiler will follow your functions, or it will follow only the main function? No Sir, matter it is depends upon defined above or upward or downward. No, sir. If we have defined our user defined function above the main function, then it will just execute line by line. Then in that scenario, sir, compiler first of all the compiler will go to main, sir. After just analyzing all the user defined function which we have Every defined below. time So it will go, every time, no matter which approach you are using. At the time of running, it always follow main function Main. first. Yes, sir. Okay. And after that main, it will decide which user defined I have to access or not. Okay. Okay. And So, what is sir, function? How many types of prototypes? so there are two types of prototype: local prototyping and the global prototype. Global prototype. And I mean that how many types we can define the prototypes, not categories, Four, that sir. it is a local or global. Four. Oh, yes. Yes, sir. Sir. Four. That is no return, no parameter. No parameters. Return with parameters. Return no parameter. No return. No return. No parameters. Is there any difference between parameter and arguments? No, sir. Basically, No, both sir. are same. They both are same, sir. Okay. Then what is the meaning of actual parameter and formal parameters? Sir, the function. Actual parameters define the function definition within function definition, and formal parameters defines and main. Formal parameters within the main. Main, sir, main. Sir, can I say answer? Actual parameter. Yes. in name. I think Sir, Manish the argument. अधूरा है तुम्हारा थोड़ा. हाँ, और कोई? Sir, the parameters. Komal Kumari is not here. Komal Kumari है. ये तो कुछ बोल ही नहीं रही. Yes, sir. There is a problem in my microphone. That's why I'm not saying. अच्छा, there is a problem with your microphone. Currently, Okay, Vinay. but yes, sir. I'm saying that. हाँ, बोलो. Sir, in actual parameter, there is no use of data type. Like inside the
actual parameter we define a data type, but in the formal parameters that don't inside we are using as a parameter. Sorry, data type. हाँ ठीक है, और दूसरे तरीके से ठीक है तुम्हारा भी। हाँ विनायक, but the parameters which are used where we call the function is called actual parameter, Actual and the parameter. parameters which we are used where we have defined the function, user defined function, is called formal parameters. फॉर्मल पैरामीटर, जहां से कॉल करते हैं वहां पे जो लिखते हैं पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में वो एक्चुअल होता है, और जहां डिफाइन करते हैं फंक्शन वहां जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो क्या होता है, फॉर्मल होता है। यानी जो सेंडर होता है, जो सेंड करता है वो एक्चुअल होता है, और जो रिसीव करता है वो क्या होता है, फॉर्मल होता है। तो जब भी फंक्शन को आप यूज करते हैं तो वैल्यू आप सेंड करते हैं वहां से, और जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है वहां पे वो रिसीव करता है। तो सेंडर जो हो गया वो एक्चुअल हो गया, और रिसीवर जो हो गया वो क्या हो गया, फॉर्मल हो गया। ठीक है, आई थिंक सब कोई अपने अपने तरीके से सही था। ठीक है, कोमल भी अपने तरीके से सही बोली। Okay, let's come to the what do you mean by recursive function? When the function function calling itself is called the recursive function. When a function call itself is called recursive function. ठीक है, then why we make a function as recursive function? Sir, it generally used for reduce the code of our programs. Sir. It generally used for reduce the code of our program. Okay. Some programs are recursive nature, then we use recursive function. Use recursive function. It is basically, sir, we can't solve each and every problem in by the means of recursion, sir. But there are specific problems which we solve by the means of recursion, like like a tower of NOE. Then we have sir factorial of a particular number, sum of n natural number, things like that, sir. And sir, the problems which we solve by the means of recursion, sir, we can also solve those problems by iterative algorithm also, sir, which we generally use in our program, sir. Okay. Absolutely sir, right. actually, sir, there is a added benefit. What is the drawback of, if I'm asking, what is the drawback of recursive function? Because you know the advantage of recursive function over loop. Yes, sir. Because loop is also used for repeating the statement. Okay. And because recursive function call itself again and again, so it also repeats its own statements again and again. So it's an advantage over loop. Then what is the drawback? Because every program cannot be made by using the recursive function, because recursive function having some drawback. What is the drawback of the recursive function? Sir, actually, sir, in every iteration, sir, in every calling, sir, it stores the extra buffer memory, sir. Extra buffer memory, absolutely right. Which is not in case of iteration, sir. Simple iteration. Actually, recursion. The term recursion uses a special data structure called a stack. Stack. Yes, sir. So for making the values a stack, it uses buffer memory for each repetition. ठीक है, तो जितने बार आप रिपीट करोगे उतना बार बफर वो बनाता चला जाएगा। ठीक है, तो जितना बफर मेमोरी वो रिजर्व करता जाएगा, ठीक है, सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होता चला जाएगा। और ऐसे कई काम हैं जिनको हजारों लाखों बार हमें रिपीट करने की जरूरत होती है, तो वैसे केस में तो हजारों लाखों वो बफर मेमोरी बनाना शुरू कर देगा। वैसे केस में धीरे धीरे क्या होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होता चला जाएगा, स्लो होता जाएगा। जबकि लूप के साथ ऐसी समस्या नहीं होती है। लूप कहता है कि एक मेमोरी जो मुझे मिलता है, मैं अपने हर आइटरेशन में उसी एक मेमोरी को इस्तेमाल करता चला जाता हूँ, कोई एक्स्ट्रा बफर मेमोरी मैं एलोकेट नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, ठीक है, एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। अगर हम वहां पे लूप यूज करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ कोड्स बढ़ रहा है। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्सिटी, उस कोड को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एल्गोरिथम को सिंपल बनाना भी एक पार्ट होता है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोगों को बताया जाता है
कि हमारा जो कोड है वो इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर इफ वी रियलाइज दैट इफ वी कैन रिप्लेस दिस लूप विद द रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है, दिस विल बी सिंपल। ओके, तो वहां पे आप रिकर्सिव का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बताया भी था, जैसे विनायक बोला टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, ठीक है, या ट्री ट्रावर्सिंग का आपका प्रोग्राम है, ठीक है। आप लोग अगर डीएस पढ़ रहे हैं उसमें ट्री ट्रावर्सिंग है, वैसे तो बताया जाता है, प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन प्रोग्राम आप देखिएगा बुक में दोनों से दिया रहता है, लूप से भी दिया रहता है, रिकर्सिव से दिया रहता है। जो लूप से बनाया होगा वो करीब करीब 60-70 लाइन का कोड होगा, और जो रिकर्सिव से बनाया होगा वो मात्र 3 लाइन का कोड। तो 70 लाइन को अगर 3 लाइन से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये तो ज्यादा बेहतर है ना, समझने और समझाने दोनों के व्यू पॉइंट से। तो वहां पे हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेकिन हमेशा हर चीज को रिकर्सिव से बनाएं ये भी सही नहीं है। This is not possible. हाँ, वो नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि वो सिस्टम के परफॉर्मेंस को पुअर करते हैं। ऐसे कई काम होते हैं जो हजारों लाखों बार रिपीट करने होते हैं, ठीक है। ओके, so this is the recursion. Let's come to the another topic, and that is, Sir, pointer of let's come first the structure and union. Okay. What is the basic role of a structure in C programming? Sir, it is used to combine the primitive data types so that we can solve the real world problems, sir. How you can solve the real world problem? Give me some examples. Sir, like if I take We an use example of a different type of data type. हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई example, give me some example. Like in float long. Yes, sir. No, In सही float है, वो long सही है। at the same time we use here. I am asking, give me a real example, real world example where you can use the structure. Yes, sir. Can I, sir? आवाज नहीं आ रही है शंकर। We be creating the. Yes, sir. हाँ, बोलो। So like in real life, we be creating the some data of employee. Here we the name of employees, the ID of employee, and the some other document like we use here correct a string, integer type, and float data type. Okay. Okay, if you want to if you want to store the record of employee, then you have to make a special data type that having data like employee ID, employee name, okay, date of joining, and some other information. Okay. So Yes, sir. composing these different data together in one unit, we required structure. Structure. ठीक है? Okay, Vinayak? yes, sir. Okay. Yes, sir. And what is union? Sir, union it is is similar a to user defined. You Komal bolo. So it is a user defined data type. It is just like a structure, but Very the good. difference is that at the time of execution, it use a one by one manner. One by one manner. Why it uses one by one manner? So it's okay. But why it is one by one manner? So because of its nature, sir. Why it's This, nature? the member of union occupies same memory Stored is- location. So using dynamic memory Yeah, allocation. that's why Can I I'm using. answer, sir? That's नहीं, we are अभी using. सबको बोल लेने दो. So because it's using dynamic memory allocation. But शंकर क्या बोल रहा है? Sir, the member of union. Dynamic memory in the allocation union, always decided by the function malloc. If you are declaring a simple variable, that will be a static. No matter you are declaring for primitive types or user defined type.
So it uses same Hmm. memory location, and that's why I'm मैं that's why I'm समझ रहा using हूँ, लेकिन मैं समझ भी रहा हूँ आप जो बोल रहे हो, वो मुझे पूरी तरह से समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा और क्लियरफाई मैं चाह रहा हूँ कि आप करें। सेम मेमोरी लोकेशन क्या यूजेस, व्हाई ऑल डेटा ऑफ यूनियन विल यूज सेम मेमोरी लोकेशन? Because sir, it copies a single largest memory in defined data type, sir. It means the union allocates memory according to its larger data type. larger data. Yes. Yes, ठीक है, sir. and all other data types will share the same memory location, and that's why, ठीक है, if we want to access or store data or feed data using union, we have to make use one by one manner. ठीक है, सर क्योंकि कुर्सी एक ही है और सबको शेयर करना है, तो एक बैठेगा तो दूसरा उठेगा नहीं, Yes, sir. दूसरा बैठा है, तीसरा आएगा तो दूसरा उठेगा। ठीक है, तो उसमें डाटा रहेगा कौन, जो सबसे Last लास्ट में आए। ठीक है, that's why sir we use union only if we want to just input the data and output the data, just like store and print, then only we use this union. स्टोर एंड प्रिंट और इनपुट और स्टोर एनीथिंग। ठीक है, अगर आप इनपुट कर रहे हैं और सिंपली जाके कहीं स्टोर कर देना है या प्रिंट कर देना है, तब भी आप यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सारे डेटा वैल्यू को एट ए टाइम एट द सेम मोमेंट स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि फर्दर में कोई ऑपरेशन करो फर्दर, ठीक है, तो वहां के लिए यूनियन नहीं है, वहां के लिए यूनियन नहीं है। फिर वहां के लिए कौन सा होगा, स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अपने हर एक डेटा वैल्यू के लिए, अपने हर एक डेटा टाइप के लिए वो अलग अलग मेमोरी ऑक्युपाई करता है। Yes, sir. It occupies Clear? separate memory. Yes. क्लियर? Yes sir. sir. Yes, sir. ओके, एंड what do you mean by self-referential structure? Do you know about the self-referential structure? Because I think you have used in data structure. Sir, it is a structure within structure. No, that is Is called it- nesting of a structure. That is not called self-referential. If one structure, if a structure can hold the address of same type another structure, same type Yes another sir. structure, then this kind of a structure is called a self-referential structure. A Sir, like we use sir in PS self-referential structure, ठीक है, always hold a pointer that will hold the address of next structure. Clear? आप लोगों ने वो पढ़ा होगा लिंक लिस्ट वगैरह? Yes sir, create लिंक लिस्ट के नोड के क्रिएशन में इसका इस्तेमाल बेसिकली करते हैं सर हम लोग। बिल्कुल, क्रिएशन में जब पूरा भी- हर जगह इंटायर लिंक लिस्ट इसी पे बेस्ड है, सेल्फ रेफरेंशियल। Yes sir. सिंगली है तो Even नेक्स्ट sir, होगा, डबली है तो नेक्स्ट और प्रीवियस होगा। ठीक है, उसी के अनुसार उसकी एड्रेसिंग करेंगे, हर नोड बनता जाएगा, वो एड्रेस अपडेट करता चला जाएगा। ठीक है, अगर sir, सेल्फ even, रेफरेंशियल अगर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ना हो वहां पे, तो आप यू कैन नॉट क्रिएट द लिंक लिस्ट। और अगर करेंगे भी तो फिर तो उससे अच्छा है कि हम एरे का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको इनर लिंकिंग के लिए, एड्रेस के इनर लिंकिंग के लिए आपको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर एक्सटर्नल आपको पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम 20 नोड बनाएंगे तो 20 पॉइंटर रखना होगा, तो उससे तो अच्छा है कि हम एरे ले लेंगे ना। ठीक है, yes तो एक बार और समझाइएगा।
एक बार और समझाए, क्या बताएं संकट, बोलो। जैसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, सेल्फ मतलब क्या हो गया, खुद, स्वयं। खुद, माई सेल्फ। यस। रेफरेंशियल, रेफरेंस मतलब हो गया एड्रेस, और स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर कहता है कि मैं अपने अंदर अपने ही जैसा अगले स्ट्रक्चर का एड्रेस रखूंगा, क्योंकि मेरा तो 50 वेरिएबल ना हो सकता है, 50 मेमोरी हो सकता है। तो अगर मैं एक मेमोरी हूं तो मैं अपने